Yeah, hi, welcome back to FSA Entertainment. Bollywood actor Ijaz Khan, former Big Boss housemate in the house today. Yes. How are you, Ijaz So bhai? his name is Prabhas. Are you talking about that guy behind or? No, this guy. Okay. This goat, ये बकरा हराम खोर है एक नंबर का ये. इसके भाई को कल काटे हम और ये उसका गोश्त है वो बड़ा लजीज है. रहा. और ये सब काम मुझसे ये आदमी करवाता है. He is actually a very heartless person Why do you say so? because his heart is with me. So he doesn't have heart. Acha. He's my friend. I love him so much. He always come to Mumbai and First I call you from the he airport. no. What he does? हाँ किधर है लाले? अरे यार मेरा 2 बजे का फ्लाइट है कल आ जाएगा क्या? अरे मतलब यार इसका मतलब ये दोस्ती की है तो ये क्या चीज हो गई यार? एक चीज है रात को 2 बजे यार. वैसे एक बात बताऊं दोस्ती रात को 2 बजे वाली अगर दोस्ती नहीं है ना तो भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती यार. बट मुझे याद है आप लोग 3 दिन तक के जगे हुए थे. थैंक्स टू हिम, राइट? ही डजंट स्लीप. ये उल्लू का चाचा है. इसको नींद ही नहीं आती भाई. ना ये सिगरेट पीता है ना ये ड्रिंक करता है ना इससे कोई व्यसन है. ये खाली जागता रहता है उल्लू से भी ज्यादा. अरे भाई हम इंसान है मर जाएगा आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा. घर बार है बीवी बच्चे हमारे जाने ही नहीं देता भाई. बट आपने खूब कंपनी दिया. Whenever he comes, I see that you always tag him along wherever you go, and he's been a great companion. See, How do you know him? after his wife he loves me, you know. Yeah, good. But I'm virgin. How do you know him, Ijaz भाई? आप कैसे इनके राब्ते में हैं? I know him since maybe 17-18 years. We used to stay in Yari Road. I used to hit on his girlfriend. Hisham bhai, you have produced a lot of, you have invested a lot of money in getting a lot of goats. How about producing a film for him? We've never thought about that, but inshallah we will work on something soon. He should do it, you know, because इंसान बकरों पे पैसा लगा रहा है, घरों पे लगा रहा है, भाई दोस्त पे भी पैसा लगा, बट ये लगाएगा मुझे मालूम है लगाएगा. और मैं इसके साथ वैसे नहीं, लेकिन अब 17 साल में इससे कुछ नहीं मांगा. 2024 में सोचा मांग के देखते देता है कि नहीं. अच्छा तुमको कभी तुम्हारे दोस्तों को आजमाना है ना, उनसे पैसा मांगो, सब समझ में आ जाएगा कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है. But लोग कहते हैं पैसों से दोस्ती खराब होती है. आज हमजा को आजमाएंगे हम लोग. तो आज ये लोग किसको आजमाने वाले और मैं किसको आजमाने वाला हूँ आज. हिशाम भाई, आपने इनकी जर्नी फॉलो की है from probably nobody to stardom. Yes. How has his journey been? I mean, if you can hold the mic. Fahd Have bhai, you followed his journey? I've known Ijaz like since his early modeling days before Glad Rags also. And he's always been the same person. He's very raw and honest, straightforward, brutally honest I would say, but he's always been the same. I don't see any changes, but now he's mellowed down in last 2 years I could say. But You the call this personality is- mellow down? Yeah, this is mellowed down. For sure this is mellowed down. You don't know him in the early days. Yeah. Before I was like him, see. Yeah, before he was a very aggressive Andul. With you know. horns. With horns. Now he's late khassi. Yeah, I mean, I'm not khasi. Late khassi. Not, no, I'm Siraj guy. Half punch. नहीं एजाज भाई खस्सी की कुर्बानी करते हैं भाई. Yeah, but ये खुद खस्सी की कुर्बानी करते हैं, but शौक कोटे का करते हैं. So we were talking about his journey. You've been following him. जी. Potential दिख रहा था शुरुआत में कि ये बंदा outspoken है. देखो फात भाई, we were friends because we were friends. We were not friends because of the profession that Yeah, he I'm was sure, from I'm or because of the profession that I come from. Yeah. We were just genuinely good friends. जैसे हम हमारे कॉलेज में हमारे कितने दोस्त होते, कई आगे निकल जाते हैं. So I remember one incident. हाँ ये माइक इधर है, ये कुछ अलग ही लग रहा है. So मेरे को फोटो शूट करवाने का था और उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर कुछ लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगते थे. तो मेरे पास साला पैसे कम थे तो मैं इसको बोला ये भाई एक फोटो शूट करवाने का कुछ करेगा क्या. बोले कितना है. तो फिर इसने वो पैसा मेरे को एनवलप में भेजा और मैं फोटो शूट कराया. तो इसका उसमें भी हाथ है, इसलिए तो आना पड़ता है ये सब. बाबा इसने उस टाइम पे बैंक में डिपॉजिट किया है, सेफ डिपॉजिट, तो अभी तक खा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. Ijaz is over exaggerating. Hey, ऐसा कुछ नहीं I'm being है. honest. He had It's a clearly payback told me time is paying in कि kind. ये पैसा He's दे paying के in भूल kind. जाना, मैं देने वाला नहीं हूँ. So I appreciated his honesty that time.
and yeah, that's why I helped him out. But I'm paying but he back is this way, you but see. but he's paying back in a lot of bigger ways, you know. And I'm आप grateful देखते to नहीं him. होगे ना टेलीविजन ज्यादा. No, But Big Boss. इनका Big Boss I used देखा to, था I used आपने? to watch, like, you know, his season. Of course, I watched because he's my friend. I watched later on season. Earlier seasons I had not watched. कैसा Because लगा? Big Boss का ऐसा था ना, hit हुआ था. वो मम्मी season लोग है से. ना, मम्मी लोग है ना बच्चों को मारते थे, बेटा 9 बजे एजाज खान आने वाला है, देखने का है उसको और सीखने का है कुछ. माँ से कैसा प्यार करते, हक की लड़ाई कैसे लड़ते, मेंटोर से कैसे बात करते, अपने आप को कैसे संभालते, अपना रिलीजन को कैसे लेके चलते, अपनी बात को कैसे रखते, खुददारी में कैसे? खुददारी में कैसे रहते एजाज हैं. भाई, आपको फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्टारडम कब मिला? यानी जब आप बाहर निकले होगे, लाइक पीपल स्टार्टेड यू नो आस्किंग यू फॉर ऑटोग्राफ एंड ऑल. हाउ वाज योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ So I स्टारडम? won. This is my second reality show. I won one reality show called Ticket to Bollywood on Zoom. Times of India का शो था. Okay. वो मैं जीता था. उसमें राम गोपाल वर्मा की फिल्म मिली थी मुझे, रक्त चरित्र, ओके एज अ विनर. Right. फिर मैंने वो फिल्म किया तो मैं ऑलरेडी स्टार बन चुका था बिग बॉस में आने के पहले. सलमान भाई called to Big नहीं, Boss. सलमान भाई क्यों नहीं बोले? सलमान भाई बोले थे ना उस टाइम पे, हाँ तेरी फिल्म देखा यार, मैं महेश बाबू के साथ वो फिल्म करने वाला था, मैं तेरा रोल बड़ा अच्छा था उसमें. तो आई ऑलवेज वर्किंग विद ऑल बिग स्टार्स लाइक महेश बाबू, NTR, रामचरण. तो ये सब मैंने पहले ही कर दिया था. बिग बॉस बहुत बाद में आया मैं. ये गैप होने के बाद एक थोड़ा अल्प विराम सा आ गया ना आपकी. वो क्या है, अभी मैं गया था ससुराल तो थोड़ा सा अल्प विराम आया, लेकिन ससुराल से थोड़ा दहेज वेज मिला है मेरे को अभी. तो आई एम enjoying, you know. See, a star is always a star, a loser is always a loser. Right. So when I came out I got my first web series in 10 days. And I was trending, alhamdulillah. When I came out of the jail, I was in trending. अच्छा, because of this thing that happened with you, did some people distance themselves from you? कुछ लोगों ने दूरी बना More दी. that he distance. Now I am changed, man. I am not meeting people because I am trending boy. So alhamdulillah, if you be next to me, you'll be famous. So I don't want that. Alhamdulillah. I'm taking care of that people who love me more, I'm going there. People who care for me, people who give me respect, I want to be there. And if you don't like me, if you don't respect me, if you think standing next to me is a problem, then you know fuck off. I I'm care sure a you fuck. must be coming across a lot of people who are very negative, right? There is a do- lot do of they people. talk about your See, if past? you're insecure, you'll be negative. Right. You can't be judgmental to people, you know. Yeah. I mean, I believe Mr. Gandhi ji जी. has gone to jail. Bhagat Singh has gone to jail. Salman Khan has gone to jail. Sanjay Dutt has gone to jail. A lot of people has gone to jail. I have gone to jail. I'm not, and I know why I'm gone to jail. I know that I was raising voice for Right. something, and that's why I was inside, and I don't care. Yeah. What is the message that you want to give to the youth? क्या मैसेज देना चाहोगे आप? I just want to say to the youth that just believe in yourself, believe in your country, and don't अपने आप को हिंदू मुसलमान में मत बांटो, अपने आप को इंसान में बांटो. वी आर ऑल इंडियंस, यू नो. सो इफ यू स्टार्ट सेइंग वी आर इंडियन, then our country will raise, I don't know where, and I think so we are all Youngistan. So ये मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं पंजाबी, मैं ये बोलना बंद करे और हम लोग बोले वी आर इंडियंस. लाइक पीपल से आई एम चाइनीज, आई एम अमेरिकन, आई एम जर्मन, आई एम यूरोपियन. Let's start saying we are Indian. Hisham bhai, thank you so much for coming here You're to welcome, India. Fahad bhai. And can you give us a brief as to what is this party all about? No, we are just a get together between friends, and that's why we are having this dinner. That's all. Actually इनके 4 बकरे बीमार थे, उनको कटवा दिया गया है और उसकी पार्टी रखी है. नहीं, ये गलत बात है. हाँ भाई, कोई बीमार नहीं थे यार I'm भाई. just joking, man. They know. He's नहीं, joking. माशाल्लाह. Serious thing never go. Serious only go to hospital. कुछ पलाई के बारे में आपने प्रमोट किया था. हाँ. Can you ask people, आपने बकरे देखे हैं? हाँ. बकरों की माशाल्लाह ये खिदमत साल कैसे भी होती है? एजाज भाई के है 2 खस्सी है हमारे पास. माशाल्लाह तैयार करके देंगे. Yes. I mean, ये शौक भी पालना चाहिए इंसान को. I mean, माइक. जी जी. ये भी एक शौक है जो इंसान को, अगर उसके बाद थोड़ा वक्त है और उसके बाद थोड़े पैसे है और नहीं भी है तो भी ये कर सकता है. मेरे हिसाब से तो करना चाहिए. मुझे तो मज़ा आता है. और MD Goat Farm is the place you go. So keep your goats on palai at MD Goat Farm. Keep your goats. खिदमत अच्छी होगी. हाँ, 100% खिदमत होगी. मैं आदमी को देखता हूँ, ये भाई बकरों को पप्पी ले लेता है यार.
अरे आपने देखा है वो? अरे बकरों को पप्पी ले रहा है भाई, अल्लाह रहम करे. He loves. अरे, मैं बकरियों को ले लेता हूँ, बाकी काम एजाज भाई संभाल लेता है. No, he's very gentle to Yeah. the animal. I mean, say, he's taking care of a lot of animals and with lot of love. बहुत प्यार करता है ये. और देखो, लास्ट में बात खत्म करूंगा कि जानवर मार खा के भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है. क्या बात है यार, क्या बात है, माशाल्लाह. See, Mohammad bhai, thank you so much, Mohammad Welcome, bhai. welcome, Any Fatah. message for Republic Day? मेरे से अच्छा मेरा भाई बोलता है रिपब्लिक के लिए. और मेरे से अच्छा हमजा भाई बोलते हैं. इब्राहिम भाई कर देगा भाई. Ibrahim bhai, रिपब्लिक के लिए हमारे तरफ. any message for people who watch your channel on this Republic Day? I think it's a very good occasion, the Republic Day. We should be proud as we are Indians and we have a very growing economy, and let's try to contribute towards our economy and forget the differences that has been created in the past. Even you were born outside of India, right? No, yes. Raised there. Yeah. Do you still have that patriotic feeling? Of course, I support Team India whenever India cricket match is going on. MashaAllah. So, yeah. So wish everybody a happy Republic Day. Happy Republic And thank you Day so much. from Thank Team you. MD. Thank you.